Hello everyone, I am Dipali Nikade, JE trainee Central Railway from Pune Division. I, along with my colleague Anil Mane, am going to present air brake system in ICF and LHB coaches. So let's start with the presentation. Before going into the details of air brake system used in ICF and LHB coaches, I would like to introduce different types of brake systems used in Indian Railway. As you can see in the slide, there are three types of brake systems. First one is handbrake, which is present in guard vac. Next one is vacuum brake system, which is not used nowadays as it has been completely replaced by air brake system in Indian Railway. The third one is the air brake system, in which compressed air is used for application of brakes. As you can see, it is further classified as single pipe and twin pipe air brake system. As the name suggests, in single pipe we have only one pipe, that is brake pipe. Today we are going to focus on twin pipe air brake system, which is used in ICF and LHB coaches. As you can see, there are four types of these: conventional, which is used in ICF and RCF coaches; BMBC, that is bogie mounted brake cylinder, which is used in ICF and RCF coach. The third is BMBS, that is bogie mounted brake system, which is used in wagons such as Box and HL. And the last one is disc brake, which is used in LHB coaches. We generally use graduated release air brake system in Indian Railways. Now let us see the that is twin pipe air brake system is used in ICF coach. In ICF coach we use conventional type and BMBC. In LHB coach we use disc brake twin pipe air brake system. Now let us see the components of air brake system. Now these are the various components which we are using in air brake system. We'll discuss these in detail in our further slides. Compressor. Compressor is present in the loco, which draws air from atmosphere and compresses it for use on the train. The next is the main reservoir. It is nothing but a storage tank for compressed air for braking and other pneumatic systems such as air suspension system. The pressure of main reservoir is 8 kg per centimeter square to 10 kg per centimeter square. Next is feed pipe and brake pipe. Now to maintain the continuity throughout the length of the train, the brake pipe and feed pipe are fitted with flexible hoses, which I'll show you in the further slides. Each hose is provided with palm end coupling to connect one vehicle to the next vehicle. Now for easy identification, the coupling heads are painted with green color for brake pipe and white color for feed pipe. The pressure in feed pipe is 6 kg per centimeter square and the pressure in brake pipe is 5 kg per centimeter square. Now this feed pipe charges the auxiliary reservoir. The auxiliary reservoir stores the air which is required to fill the brake cylinders for brake application. Now in goods, this air auxiliary reservoir or AR is of 100 liters and it is maintained at 5 kg per centimeter square. And in coaching, it is of 200 liter and it is maintained at 6 kg per centimeter square. The next is the control reservoir. As you can see in the slide, this is the control reservoir, which is 6 liters in goods, maintained at 5 kg per centimeter square, and 9 liters in coaching, which is also maintained at 5 kg per centimeter square. Now you can see this yellow color. This is common bracket pipe, which has 3 connections coming from one from auxiliary reservoir, the other from brake pipe, and the last one goes to brake cylinders. Now we'll discuss some more parts. The next is distributor valve. This is also called the heart of the air brake system. It senses the pressure difference between BP and control reservoir and it acts accordingly for application of brakes and release of brakes. The next is the cutoff angle cock. At the ends of each vehicle, angle cocks are provided to allow the ends of the brake pipe hose to be sealed when the vehicle is uncoupled. Now this prevents the air being lost from the brakes. Brake pipe. Next, these are the hose pipes, air hose pipe. These are flexible pipes which help us to
connect one coach to the adjacent coach. These are the palm end couplings. These also consist of MU washer, which avoid the leakage of air. Next is brake cylinder. Now each trolley consists of two brake cylinders. As you can see, this is the brake cylinder, this is piston. Now air from AR comes to brake cylinder and the piston pushes outward and thus brakes are applied. Next is dirt collector. Now dirt collector is fitted between FP and AR and also between BP and distributor valve. Now the function of this dirt collector is to remove dust, moisture and scale particles from air before it enters the DV and auxiliary reservoir. Now it works on the principle of centrifugal action. The next is brake blocks. Brake blocks are the frictional material which is pressed against the surface of the wheel tread by the outward movement of the brake cylinder piston. Brake blocks are the main source of wear in the brake system and they require regular inspection and need to be changed whenever required. Now let us see the line diagram and working of twin pipe air brake system. The first one is BP number 1, which is charged with 5 kg per centimeter square. BP is connected to DV. This number 9 is DV through IC, that is isolating cock, DC, that is dirt collector, through the common bracket pipe. This number 10 is common bracket pipe, which has connections coming from BP, AR and connection which is going to both sides of brake cylinders. Next is FP, which is connected to auxiliary reservoir through isolating cock, dust collector and NRV, that is non-return valve. This non-return valve does not allow air to pass from AR to FP back to FP. It only allows air to pass from FP to AR. Number 3, this is called cut-off angle cock, which is used to seal BP and FP when it is detached to prevent air leakage from BP and FP. Next, number 5 is air hose pipe, which is used to connect two adjacent coaches. Now this number 16 is guard emergency brake valve. Number 17 is guard emergency brake handle, using which we can reduce BP pressure to apply brakes. Number 18 is 8 mm hole through which BP pressure can be connected to the atmosphere. BP is also connected, here you can see BP is also connected to PEAS, that is passenger emergency alarm system, through this IC. Now whenever a passenger pulls chain, this gets activated and in turn activates the passenger alarm system device, which reduces the BP pressure through 8 mm hole in case of ICF and through 19 mm hole in case of LHB. Now as you can see, a connection from DV goes to both cylinders, brake cylinders, through branch pipe and ICs on both sides. So you can see that there are total 5 ICs in this line diagram. One is this IC, which is connecting FP and AR. Next is this IC, which is connecting BP and DV. Then you have this IC number 24, which is connecting BP to PEAS, and these two ICs which are connecting DV to the brake cylinders. Now this is the explanation of the line diagram. Now let us see how this works. Now under normal conditions, the brake pipe is charged with 5 kg per centimeter square from the loco. The control reservoir and the auxiliary reservoir are also charged with 5 kg per centimeter square from BP through DV in case of single pipe system. In twin pipe system, auxiliary reservoir is charged to 6 kg per centimeter square through feed pipe. When BP is 5 kg per centimeter square, the brake cylinder is connected to exhaust through DV in order to keep the brake in released position fully. Whenever the brake pipe
pressure is reduced below CR pressure. We know that BP pressure and CR pressure are same in case of normal condition, but whenever we want to apply brakes, BP pressure is reduced below the CR pressure. The DV then connects the auxiliary reservoir to the brake cylinders, and it sends air from auxiliary reservoir to brake cylinder, and the brake application is done through the piston. Whenever the brake pipe pressure is equal to CR pressure, DV disconnects the brake cylinder from AR and in turn connects the brake cylinder with exhaust for the release of brakes fully. Now there are four types of processes involved in working of twin pipe air brake system. The processes involved are charging, application, release, and manual release. Let us see these in detail. During charging, brake pipe is charged with 5 kg per centimeter square by the driver brake valve from the loco. Feed pipe is charged with 6 kg per centimeter square. AR is charged with 6 kg per centimeter square. Up to 5 kg per centimeter square, it is charged by both BP and FP. Beyond 5 kg per centimeter square and up to 6 kg per centimeter square, it is exclusively charged by FP. The CR is charged through the distributor valve to 5 kg per centimeter square from BP, and then during charging, brake cylinder is connected to exhaust through DV to keep the brakes in released condition. Now, what happens in case of brake application? Now, brake application, the brake pipe pressure is reduced in steps. These are given below. As you can see, the first stage is minimum reduction. In minimum reduction, we reduce BP pressure by 0.5 to 0.8 kg per centimeter square. Then in service application, it is reduced from 0.8 to 1 kg per centimeter square. In case of full service application, 1 to 1.5 kg per centimeter square BP pressure is reduced. That is, brake cylinders have brake pressure of 3.8 kg per centimeter square. Then in case of emergency application, the complete BP pressure, that is 5 kg per centimeter square, is reduced so that the brake application is as fast as possible. And in released condition, BP pressure is maintained at 5 kg per centimeter square so that BP pressure and CR pressure are equal and the brakes are in release condition. Next is releasing. BP pressure is increased in steps. As we are reducing the BP pressure in steps, we are also increasing the BP pressure in steps. During release, the BP pressure is increased in steps. When the BP pressure is increased, the brake cylinder is disconnected from AR and in turn it is connected to exhaust. The air from brake cylinder is released or vented progressively depending upon the increase in brake pipe pressure. When the brake pipe pressure is brought to 5 kg per centimeter square, from the brake cylinder is completely exhausted and brakes are released fully. Next is manual release. When the rake is detached from engine, the BP pressure drops. When coach is detached, the BP pressure drops and it becomes less than that of CR pressure. Now due to this, brakes are applied in the rake. To release these brakes, BP pressure has to be made equal to CR pressure. To attain this condition, either we can increase BP by charging it, or we can reduce the pressure of CR. Now to reduce the pressure of CR, a component which is called as QRV, quick release valve, is used, which connects CR to the exhaust. Due to this, CR pressure drops, and when CR pressure becomes equal to BP pressure, the brakes are released. Now, these were all the processes that were involved in the twin pipe air brake system. Now, let us see the difference in air brake system of ICF and LHB coaches. The first difference is that number of auxiliary reservoir in case of ICF is only one, which is of 200 liters. In case of LHB, there are two auxiliary reservoirs. Capacity of one is 125 liter, which is used for the braking system, and the other is of 75 liters, which is used for the toilet systems. In case of ICF, brake blocks are pressed directly against the wheel tread to apply brakes. But in case of LHB, brake pads press against disc mounted axle. In case of ICF, the brake rigging is complex.
as it consists of many components. In case of LHB, it is much simpler as bogie mounted brake calipers are connected to brake cylinders which hold the brake pads against the discs. That is, directly the air from auxiliary reservoir reaches the brake cylinders, and through calipers, the brakes are applied to the disc. In ICF, braking distance in loaded condition at 110 kmph is around 1300 to 1500 meter. In case of LHB, this has been reduced to the braking distance has been reduced at 130 kmph to 1200 meter. In case of ICF, there are no brake application and release indicators. In case of LHB, indicators are present if the brakes are applied. They become red, and when brakes are released, they become green. So let us see now. These two diagrams show the braking systems in case of LHB and coach. The first one is disc brakes, which are used in LHB coach. You can see that the disc consists of grooves. These grooves help in heat dissipation during high speed running of train. The disc may get heated up, so these grooves are provided for heat dissipation. As you can see, there are brake calipers which hold the brake pads, which press against the disc. These discs are mounted on the wheel axle. This is the wheel, and the wheels, this is the axle, and this is disc which is mounted on the axle. In case of ICF, we use brake blocks. This is the brake shoe, and the brake blocks press directly against the wheel tread. The disadvantage of this system is that there is more wear of wheels as compared to that of LHB coach, as there is no direct contact of pads to the wheels, so the wheel wearing is less in case of LHB coaches as compared to ICF coaches. Now my colleague Anil Mane will explain you the braking system in ICF and LHB coaches practically. Thank you. हेलो दोस्तों, आई एम अनिल माने, आई एम जेई इन पुणे डिवीजन। आज मैं आपको ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम इन आईसीएफ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नाम से पता चलता है, ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में दो पाइप का यूज किया जाता है। पहला है फीड पाइप और दूसरा है ब्रेक पाइप। फीड पाइप में 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनाया जाता है और ब्रेक पाइप में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनाया जाता है। फीड पाइप का कलर कोडिंग व्हाइट रहता है और ब्रेक पाइप का कलर कोडिंग ग्रीन रहता है। इन दोनों की डाया 25 mm रहती है। इन दोनों के एंड्स पर कट ऑफ एंगल कॉक लगाए जाते हैं। यह ऑक्सिलरी रिजर्वायर है एआर। इसकी कैपेसिटी 200 लीटर रहती है। इसको 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से एफपी चार्ज करता है। एआर और एफपी के बीच एक आईसी, एक डीसी और एनआरवी लगाया जाता है। डीसी का काम मॉइस्चर और डर्ट को एआर में जाने से रोकना होता है। एनआरवी एआर की हवा वापस एफपी में जाने से रोकता है। ए ड्रेन कॉक है, इससे एआर को एम्प्टी किया जा सकता है। एक कंट्रोल रिजर्वायर है सीआर। इसकी कैपेसिटी 9 लीटर से इसे बीपी डीवी के द्वारा चार्ज करता है। इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर बनाया जाता है। बीपी और सीआर के बीच एक आईसी और एक डीसी लगाया जाता है। सीआर के बाजू में कॉमन ब्रैकेट पाइप लगाया हुआ है। इसमें एक कनेक्शन बीपी से, दूसरा कनेक्शन एआर से और एक कनेक्शन दोनों साइड में 2 ट्रॉलीज को जाता है। ये है डीवी। इसको हार्ट ऑफ द ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम ऐसे भी कहा जाता है। इसका काम ब्रेक पाइप और सीआर के प्रेशर डिफरेंस को सेंस कर एआर की हवा ब्रेक सिलेंडर में भेजना होता है। अब हम ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम के वर्किंग के बारे में जानेंगे। ये वर्किंग 4 प्रोसेसेस में डिवाइड किया गया है। पहला है चार्जिंग। चार्जिंग में एआर को 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज किया जाता है। 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर तक एआर को
बीपी और एफपी दोनों मिलकर चार्ज करते हैं। उसके बाद 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर तक एआर को सिर्फ एफपी चार्ज करता है। चार्जिंग में सीआर को बीपी डीवी के द्वारा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज करता है। ड्यूरिंग चार्जिंग डीवी ब्रेक सिलेंडर को एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट कर ब्रेक रिलीज कंडीशन में रखता है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में डीपी का प्रेशर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप किया जाता है और ए प्रेशर ड्रॉप डीवी सेंस कर एयर की हवा ए ब्रांच पाइप से दो साइड में ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। ये ब्रेक सिलेंडर है, इसमें डीवी एयर की हवा भेजकर प्रेशर बनाता है और पिस्टन बाहर आता है। एक ब्रेक रिगिंग है, इसमें जेड लीवर, कनेक्टिंग लीवर और फ्लोटिंग लीवर आता है और ये ब्रेक बीम है। जब पिस्टन बाहर आता है, ये ब्रेक रिगिंग के द्वारा व्हील पर ब्रेक शू और ब्रेक ब्लॉक के द्वारा ब्रेक लगता है। तीसरा प्रोसेस है रिलीज। रिलीज में ब्रेक पाइप का प्रेशर स्टेप बाय स्टेप वापस 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वॉल सेंस कर ब्रेक सिलेंडर को एग्जॉस्ट पोर्ट से कनेक्ट करता है और ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर स्टेप बाय स्टेप कम करता है। और रिलीज इन दोनों को मिलाकर ग्रेजुएटेड एप्लीकेशन एंड रिलीज सिस्टम ऐसे भी कहा जाता है। एप्लीकेशन को 3 to 5 सेकंड का टाइम लगता है और रिलीज को 15 to 20 सेकंड का टाइम लगता है। जब लोग को डिटैच किया जाता है तब बीपी का प्रेशर 0 बन जाता है, परंतु सीआर में हवा रहने की वजह से सीआर का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बना रहता है। इसके वजह से ब्रेक एप्लीकेशन होता है। तो ब्रेक रिलीज करने के लिए सीआर को एम्प्टी करना जरूरी होता है। ये है QRV, क्विक रिलीज वाल्व। एक खींचने पर डीवी सीआर को एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर सीआर को खाली करता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। जब इमरजेंसी केसेस में पैसेंजर अलार्म चेन पुल करता है तब ये डिवाइस एक्चुएट होता है। इसमें 8 mm एग्जॉस्ट चोक लगा हुआ होता है। जब ये एक्चुएट होता है तब बीपी की हवा इस चोक के द्वारा एटमॉस्फेयर में भेजी जाती है और बीपी का प्रेशर ड्रॉप होता है। इसके वजह से ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। ये है कट ऑफ एंगल कॉक। इसका उपयोग जब कोच डिटैच किया जाता है तो एफपी और बीपी को बंद करने के लिए हुआ होता है, किया जाता है। एयर होस पाइप का उपयोग दो कोच में एफपी और बीपी की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इन दोनों को कनेक्ट पालमेन कपलिंग से किया जाता है। पालमेन कपलिंग में MU वॉशर का उपयोग किया जाता है जो लीकेज अवॉइड करने के लिए होता है। एफपी का कट ऑफ एंगल कॉक व्हाइट कलर का होता है और ये थोड़ा ऊपर रहता है, बल्कि बीपी का कट ऑफ एंगल कॉक ग्रीन कलर में रहता है और एफपी के कट ऑफ एंगल कॉक के नीचे रहता है। सिस्टम का वर्किंग ICF और LHB में समान रहता है। LHB में ट्विन पाइप एयरबैग सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, जैसे कि ICF में कंट्रोल रिजर्वायर की कैपेसिटी 9 लीटर्स थी और LHB में कंट्रोल रिजर्वायर की कैपेसिटी 6 लीटर्स है। ICF में सारे IC अंडर गियर में लगे हुए, बल्कि LHB में सारे IC ब्रेक कंट्रोल पैनल में लगे हुए। इसकी वजह से ट्रबल शूटिंग में आसानी पड़ती है। ये है ब्रेक इंडिकेटर्स। इसके ये जब ग्रीन रहते हैं तब हमें पता चलता है कि ब्रेक रिलीज कंडीशन में, और जब ये रेड हो जाते हैं तब ब्रेक एप्लीकेशन हुआ है, ऐसे समझ आता है। जैसे कि ICF में एयर की कैपेसिटी 200 लीटर थी और LHB में दो एयर यूज किए गए। एक की कैपेसिटी 125 लीटर और दूसरी की कैपेसिटी है 75 लीटर। 125 लीटर वाला एयर ब्रेकिंग के लिए यूज किया जाता है और 75 लीटर्स वाला एयर CDDS मतलब कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। में हमने देखा कि ब्रेक ब्लॉक सीधे व्हील थ्रेड पर फ्रिक्शन अप्लाई कर ब्रेक एप्लीकेशन करते थे। इसके वजह से व्हील थ्रेड का वेयर हो जाता था और ब्रेक सिलेंडर और ब्रेक ब्लॉक के बीच
ब्रेक रिगिंग सिस्टम का यूज आईसीएफ में किया गया था, जबकि एलएचबी में ब्रेक कैलिपर यूज किया जाता है। ब्रेक कैलिपर पे ब्रेक पैड्स माउंटेड है। ब्रेक पैड्स ब्रेक डिस्क पर फ्रिक्शन जनरेट कर ब्रेक एप्लीकेशन कर देते हैं। यह है ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क में ग्रूव्स बनाए गए। इसका उपयोग हीट डिसिपेशन में होता है। ये सारे मॉडिफिकेशन जो एलएचबी में किए गए उसके कुछ फायदे हैं, जैसे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस एलएचबी में एट 130 kmph में 1200 मीटर रहता है, बल्कि आईसीएफ में यही 110 kmph पर 1300 से 1500 मीटर तक ब्रेकिंग डिस्टेंस रहता है। मतलब एलएचबी का ब्रेकिंग डिस्टेंस आईसीएफ के ब्रेकिंग डिस्टेंस से कम है।